तो उस दिन उनको कुछ मिला ही नहीं, he didn't got anything, खाली हाथ आना पड़ा। फिर वो थे क्या, कृष्णा बोलते वहां में हम प्रोवाइड करेंगे, कुछ तो प्रोवाइड हुआ नहीं है, यानी कट वहां में हम जैसे ही अरेंजेस थ्रू समवन, ही डजंट कम हिमसेल्फ। और खुद आते तो करते थे ना अरेंजमेंट मेरे लिए, अरेंजमेंट किया नहीं, तो ही कटेड दैट। एंड द नेक्स्ट डे ही अगेन वेंट फॉर मधुकरी। व्हेन ही वेंट, द वाइफ वाज वेटिंग फॉर हर हस्बैंड टू स्टार्ट कुकिंग, और गेट पे नॉक नॉक होता है, टक टक, एंड शी वाज लाइक टेकिंग सम टाइम, और जो से नॉक नॉक होता है, जल्दी खोलो जल्दी खोलो, बाहर से आवाज आती है। जैसे वो वाइफ खोलती है, दो सुंदर बच्चे दिखते हैं सामने, और उनके कंधे पे बहुत सारा बोझ रहता है, हैवी लोड। ठीक है, वो कहते हैं भाई हटो हटो हटो, बहुत भारी है, बहुत भारी है। उसको हटाते हैं और पूरा का पूरा बड़ा सा जो सामान है उसको नीचे जमीन पे रख देते हैं। और थक गए भाई उठा उठा के। तो शी आस्क्ड, भाई भाई आपके साथ ऐसा अत्याचार किसने किया है? छोटे छोटे मासूम बच्चे हो आप, बस आस्क यू टू लिफ्ट सच अ हैवी लगेज। किसने किया है? द स्मॉल बॉय, द सावला वन, ही सेज, किसने किया है? तुम्हारे पति ने किया है। हम जा रहे थे मार्केट में कुछ खरीदने के लिए, उसने जबरदस्ती हमें बुलाया, बोला ये लेके मेरे घर पे छोड़ दो। हम कहे हम छोटे बच्चे हैं, इतना बोझ कैसे उठाएंगे? तो हमें मारा, देखो कितना जोर से मारा, देखो, और अभी भी निशान है, दिखा रहा था। मेरे पति ने ऐसे किया है, आने दो हमको, तुम बच्चों इधर ही खुद मेरे लिए खाने को बनाऊंगी, तुम खा के जाना। ना ना हमको जाना पड़ेगा, वापस मारेंगे तुम्हारे पति। तो नहीं मारेंगे, टेंशन मत लो। उनको बिठाती है, उनको खिलाती है, फिर रन अवे। जब जाते हैं भाई, आपका पति वापस आके मारेगा, और पति पत्नी वेट करती है, अब आने दो। अब वो आते हैं, and he sees, and he gets a shock of his life when he comes in the house. What he sees, that उनकी बीवी खाना खा रही है। अभी तो नॉर्मल है, राइट? अभी नॉर्मल नहीं था कि पत्नी बिना पति के कभी खाना नहीं खाती, उनके आने के बाद ही खाती है, उनके साथ में खाती है। तुमको समझ में आ गया, समथिंग, कुछ तो गड़बड़ किया है मैंने, he got the sign, something is wrong, and he tries to console her and says, भाई बोल तो क्या हुआ, मैंने क्या किया? तुमने क्या किया? मासूम मासूम बच्चे थे दो, उनके हाथ इतना सारा सामान भिजवा दे खाने पीने का, क्या जरूरत थी उनको परेशान करने की? कौन सा खाना, कौन से बच्चे, क्या बोल रही हो? कौन से बच्चे? ये देखो इतना सारा किराना दे के रखा है महीने भर का, कौन ने भेजा? मैंने तो कुछ भेजा नहीं यहाँ पे। क्या नहीं भेजा? दो बच्चे आए थे और बोल रहे थे कि तुमने उनको मारा भी, पीछे उनके निशान भी दिखा रहे थे। तो बच्चे आए थे, तो कैसे बच्चे थे? एक सावला था, एक बहुत गोरा था, और सावला वाला ज्यादा कंप्लेन कर रहा था। तो उनको क्लिक होता है, फिर जाते हैं अपने बुक में और देखते हैं जहां पे उन्होंने वहां में आम को कट किया था, कृष्ण वो आम को वापस लिख देता है, आई पर्सनली प्रोवाइड, आई पर्सनली प्रोवाइड। This is what we have to see in our life. Krishna is providing us. He's giving us this body, he's maintaining us. We are doing all nonsense. Still he's giving us air to breathe. Even though we are polluting everything, still he's giving us something. This nature is working in the bad condition also. Such is the arrangement. But still we are not grateful. If we are not grateful, then there is no life then. Life is life when there is gratefulness, when we are gratitude, we filled with gratitude. Otherwise, we will take things for granted. And you will take your life also for granted. So we need to be grateful, and we need to be grateful only for Krishna. Good, bad, still grateful. मेरे हिसाब से हुआ फिर भी grateful, मेरे हिसाब से नहीं हुआ, ठीक, कृष्णा बचा लिया मुझे। We all know that past time, right? एक राजा था और उसके मिनिस्टर था जो भक्त था। तो जब भी कुछ होता था मिनिस्टर बोलता था जो होता है अच्छे के लिए होता है, ठीक है। तो राजा एक बार हंटिंग कर कुछ तो करने जा रहा था, प्रैक्टिस कर रहा था आर्चरी की, और गलती से उसकी शाही उंगली कट जाती है, कड़ी मतलब निकल जाती है, पूरा वो इंसिडेंट हो जाता है, और राजा परेशान, शाही उंगली निकल गई है, हल्ला गुल्ला हो जाता है, सब बोलते हैं बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। ये मिनिस्टर कहता है जो होता है अच्छे के लिए होता है। जैसे मिनिस्टर सुनता है तू नालायक, तू जेल में जा, चल चल गो इन जेल, उसे जेल में डाल देता है। और फिर राजा अगले दिन निकल जाता है शिकार करने के लिए जंगल में, he goes to the जंगल, एंड वहां पे मिनिस्टर के साथ में चले जाता है, ठीक है। और आखिरी में वो अकेला फंस जाता है कहीं पे, तो घूम जाता है और उसको पकड़ लेते हैं आदिवासी जंगली लोग, और उनको पता चलता है ये तो अभी शिकार है भाई, इसको अभी बलि चढ़ाएंगे काली माता को, और उसको लेके जाते हैं, उसको बलि चढ़ाएंगे, लेके जाते हैं। अच्छा मिला है, राजा का बॉडी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छे से काली माता बहुत ज्यादा खुश होंगी, उसको लेके जाते हैं, बलि चढ़ाने वाले रहते हैं, और देखते हैं इसकी उंगली मिसिंग है। ओ ये अच्छा ऑफरिंग नहीं है, ये एकदम दूषित है, ये झूठा ऑफरिंग है, उसको फेंक देते, जा जा वापस घर पे जा, फेंक देते। और फिर राजा आता है, इसको अकल आती है, ये उंगली कटी हुई इसलिए मैं बच गया, और मेरे हाथ जान
निकल जाती। तो वो जाता है राज्य में और कहता है भाई वो मिनिस्टर को निकालो, वो सही कह रहा था, जो होता है अच्छे के लिए होता है। फिर मिनिस्टर से पूछता है ठीक है मेरी उंगली कट गई मैं बच गया, मगर तुम्हें जेल में जाना पड़ा और सड़ना पड़ा, उसमें क्या अच्छा हुआ? बोला, अच्छा ही तो हुआ, आप जाते थे, आपकी भले नहीं होती तो दूसरा नंबर किसका आता था? मेरा ही आता था, राइट? सो जो होता है अच्छे के लिए होता है। दिस इज व्हाट वी हैव टू सी, वी हैव टू सी द लॉन्ग टर्म विजन। और अच्छा कब होगा? जब आपको कृष्णा दिखेंगे उसमें, जब कृष्णा के लिए आपका फेथ बढ़ेगा तो वो अच्छा है, ना कोई फायदा नहीं है। So this is what you have to say. You have to be grateful to Krishna. And when you pray, Krishna will let you know कि कैसे उन्होंने मदद की है। जब गलत होता है हमारे साथ में तो हमें लगता है बहुत गलत हो रहा है, हम संघर्ष करते हैं। 1 साल 2 साल बाद अकल आती है, ये अच्छा हो गया यार, अगर ये नहीं होता तो मैं भी फंस जाता था। ये सबके साथ हुआ है ऐसा, कोई मना नहीं कर सकता। जो भी अभी 20 के ऊपर है सबको एक्सपीरियंस हो चुका है कि ऐसा होता ही है। So let's do that. Let's be grateful to Krishna. आज हम यहाँ पे हैं, एक अच्छा मौका मिला है यहाँ पे सुनने का कुछ। Let's be grateful to Krishna. Let's try to do something for Krishna. Krishna is doing so much, so many things for us. So let's do something little for Krishna. और ये लिटिल ऑफरिंग करके ही हम कुछ बड़ा कर सकते हैं लाइफ में। और हमें बड़ा कुछ नहीं करना है, हमें बस भक्त बनना है। वी स्टार्ट फ्रॉम लिटिल। सवेरे उठ के हरे कृष्णा बोलूंगा, और अच्छी इच्छा है तो एक माला कर लूंगा, क्या अलग अलग लड़कियों को देखूंगा, कृष्णा का एक फोटो देख लेता हूँ, मिलने तो वाले है नहीं है, ठीक है? तो लेट मी सी कृष्णा है, वो मंदिर में दिखेंगे हमेशा जाऊंगा तो। धोखा तो मिलने नहीं वाला है, ये तो धोखा की गारंटी देने वाली है, ठीक है? So why should I waste time in that? Let's focus on Krishna. And this is the opportunity that we have in this human body to focus on Krishna. Animals can't focus. We can focus. So let's not become two-legged animals. Let's be human and try to do something for Krishna. Thank you. Hare Krishna. So, any questions? कोई सवाल? सब कुछ समझ में आ गया या तो कुछ भी नहीं समझा? Yeah, any question or comments? सब सही बाकी लाइफ में? हाँ, right answer. It said only 2 persons can be happy in this material world. पहला जो भगवान का भक्त है, परमहंस, जो सिर्फ भगवान पे फोकस है टोटली। दूसरा बेवकूफ आदमी। So if you are not a devotee, so you come in the second category. Yes, प्रभु जी। हाँ। प्रारब्ध तो फिक्स ही रहता है प्रभु जी, मगर जब आप जो प्रारब्ध डिसाइड करता है उसके शेल्टर में आ जाते हो, सर्व कारण कारणम जिसको कहा गया जो कृष्णा है, तो कृष्णा वही प्रारब्ध आपके शुद्धिकरण के लिए यूज करते हैं। जो प्रारब्ध आपको तकलीफ देने वाला था और आपको अफसोस करवाने वाला था, वही प्रारब्ध से आप शुद्धिकरण करके कृष्ण के शरण में और ज्यादा जाते हो। और जब ज्यादा शरण में जाते हो तो आपको फर्क नहीं पड़ता है अच्छा हो या बुरा हो। तो ये साइंस है उसके पीछे। और कृष्ण कहते हैं भक्ति शास्त्र में कि कृष्ण निकाल भी देते हैं, कोई कोई चीज जो फिक्स रहती है उसको भी उड़ा देते हैं। तो कृष्णा के हाथ में ये सब चीजें बस है। मगर तो कृष्ण के शरण में आ गए तो जैसा भी छत के अंदर मिल गया शेल्टर, बाहर आंधी आए तूफान है क्या फर्क पड़ता है, शरण तो मिल गया। तो वैसा सिचुएशन, इट डजंट मैटर। और yeah, but you want to use, not there are only not human species, there are 84 lakh species, right? And Krishna is taking care of all the species. We are just thinking about our own species. हमारे काम का नहीं है, मगर वहाँ पे बहुत सारे जीव जंतु हैं जो जिनके काम में आ रहा है। So it's that because we are part of this system, we are not the whole system. Humans का ये प्रॉब्लम, उनको लगता है कि ये सब हमारे लिए होना चाहिए। नहीं भाई साहब, जानवरों के लिए भी है। जितना भी लैंड है हमारे उसमें अपार्टमेंट बनने चाहिए, जानवर कहाँ पे रहेंगे? क्या जरूरत है उनकी? To be Krishna conscious is to understand that every species which is given created by Krishna, they are important.
because there is a soul in that body. Krishna doesn't do anything without purpose. That's the first thing. There's always a purpose. We can't see that. But if you go in the farm, and those who have done farming, they really know how Krishna's this nature work and how brilliant it is, how beautiful it is, and how merciful it is. Everyone is maintained. I can give you more details, but I don't want to go in now. Yes, bro. Why you want to control the mind? You are not a controller. Are you the controller? Who is the controller? So give the mind to Krishna. How to give the mind to Krishna? Chant Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And let Krishna decide what he wants to do with the mind. चंचलम होता है तो चंचल पे फोकस नहीं करना है, किस पे फोकस करना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। वापस चंचल होगा, वापस लेके जाएंगे, वापस चंचल होगा, वापस लेके जाएंगे। एक मगर इसमें प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इसमें जब कंट्रोल में क्यों नहीं आ रहा है भाई साहब? कल तो था कंट्रोल में, कंट्रोल में नहीं था, आप फोकस थे इसलिए कंट्रोल में था। अभी फोकस नहीं हो इसलिए माइंड ट्रिक कर रहा है कंट्रोल करने के लिए। कंट्रोल कर भाई। माइंड कैन बी योर बिगेस्ट एनिमी और बेस्ट फ्रेंड। इट्स अप टू अस हाउ टू एंगेज इट। सो रादर देन कंट्रोलिंग इट, वी शुड एंगेज इट। ओके, हरे कृष्णा सुन चुपचाप। बोलेगा नहीं मुझे मूवी देखना है, नालायक बच्चा रहता है ना, बिना कारण उड़ता है और तमाशा करता है, वैसे हमारा माइंड है। तो कहने हाँ मिलेगा मूवी, अब थोड़ा जब कर ले। तो वी इग्नोर द rascal kid or the demonic monkey. So by trying to make it hear transcendental sound vibrations from the morning, your morning is very important. When you get up, what do? You get up by seeing your chat of your loved ones. Oh, कितना हार्ट आया है, वाह 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 वाह, ठीक है, very good. Or किस or you get up by okay Krishna, thank you for waking me up. Now let me fill my early morning by sound vibrations of Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna. The more you do that, the whole day will be properly engaged. This is what we have to do. Every morning we have to fill our life with sound vibration. That's what we do. 4 p.m., 4 a.m. we get up. What we do? We do kirtan and we dance. कौन है भाई पागल लोग 4 बजे उठ के नाचते हैं? भाई भगवान उठ रहे, भगवान को देख के हम खुश हो रहे, हम नाच रहे हैं। और फिर जपा करते फोकस, और फिर दिनेश सनराइज होने के बाद फिर रेगुलर एक्टिविटी। कोई गृहस्थ है, कोई बाहर के काम करेगा, कोई ब्रह्मचारी है, वो मंदिर में सेवा करेगा। हर कोई कर रहा है मगर कृष्णा के लिए कर रहा है। जो उसकी सिचुएशन है, जो उसका सो कॉल्ड नेचर है, उसके हिसाब से वो एंगेज है, मगर कृष्णा के लिए कर रहा है। मगर मॉर्निंग में हर कोई वही कर रहा है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, सन्यासी, कोई भी हो, वो वही चीज कर रहा है, सेम चीज, वो सेम मंत्र जप रहा है जो बाकी लोग जप रहे हैं, कुछ अलग नहीं कर रहा है। तो ये समानता है। ड्यूटीज अलग अलग रहेंगी, ऑब्वियसली ड्यूटीज अलग अलग रहेंगी। जैसे फुटबॉल मैच है, हर कोई प्लेयर है, मगर एक लेफ्ट बैक रहता है, एक सेंटर बैक रहता है, एक मिडफील्डर रहता है। हर कोई रोल करता है, मेन गोल क्या है? सामने वाले को गोल मारना। तो इधर भी सब कुछ अलग अलग रोल्स है, मगर मेन गोल क्या है? टू प्लीज कृष्ण वासुदेव। तो ये मेन गोल है। और कुछ और कुछ सब कुछ हो गया प्रभु जी, बस खिला लो, बस कुछ हो गया है। या सो आप लोग है, वो अभय अर्जुन है बाहर है क्या? नहीं, आज मृदंग बजाओ। सो विल डू सम कीर्तन जस्ट टू प्रिपेयर योर स्टमक फॉर टेकिंग प्रसादम। सो कुर्सियां हाथ में उठा के पीछे रख दीजिए और यहाँ पे जगह बना दीजिए। हाथ में उठा के इसको ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे। हरे कृष्ण. So welcome all of you for this self-excellence Sunday session. And the topic is, what's the topic? Being opportunistic in which life? Material life. Oh, क्या एनिमल का अलग लाइफ होता है क्या? हर एक का मटेरियल लाइफ है. Specific which life you are talking about? We can ask ourselves why we don't have animal, birds. उनका भी उद्धार होना चाहिए, right? Why they are not amongst the audience? What will be your answer? Why the animal species are not part of the audience today? What's the reason? Karma, forget karma. If I even bring forcefully dogs and pigs and everything, will they hear what I'm saying? Will they able to follow that? Right? But if I bring you guys, like as you're here, you something will go inside, right? Little bit transformation will happen, and little bit actions you will take after listening. But even though animals have ears, have eyes, they won't be able to relate to the instruction, right? Because they are not capable, or the species of animals are not capable to take knowledge. Their intelligence are limited to only four activities. What is that? To sleep, to eat, to enjoy the senses, expand, and protect. नाखून दांत जो भी है, wings. This is what they are mostly engaged, and this is what mostly people are engaged. They are engaging their consciousness in these four activities only: eating, sleeping, mating, and defending. Defending means bhaya. They are fearful. Something will happen. That's why we have big, big locks, big, big gates, wire fencing in this. Why do we have that? Because we are fearful. Our enjoyment will be taken away by something. So animals are also doing that thing without going to degree college and having a degree. And we are also doing that same thing after wearing shirt, pant, coat, tie, and what we say, दुपट्टा क्या है वो, क्या गले का पट्टा, हरी बोल, स्कार्फ नहीं, वो क्या है बोलते हैं उसको, आईडी कार्ड. Right? We are doing same thing sophisticatedly, but the basic element is eating, mating, sleeping, and defending. But humans are capable of things beyond these four things, which is inquiring about higher purpose. Because these four things is available to everyone. Even worm has eating, sleeping, mating, defending. Okay. So humans are said in wise scriptures, they should not endeavor too much for these four activities. They should also engage their energy in inquiring about something higher. And what is that higher? Who am I? Forget about spiritual. Let us take spiritual later on. Who am I? So who am I? Soul. Prove me. Show me that you are soul. Give some explanation that you are soul. How will you explain it? I am soul. If someone says, यार जतिन or whatever your name is, कैसा है तू? ए सोल का कुछ नाम नहीं होता है. जतिन वतिन नहीं बुलाने का, सोल बुलाने का. Right? So, what will you say? How will you explain? If you say you are soul, you are reading Bhagavad Gita, people ask you, शरीर नहीं हम आत्मा है, कैसे बताओगे उनको? So anyone want to try to explain I am soul, not body? It's very easy. Soul have conscious. That goes more very technical. Something simple, which anyone new can understand. Like when someone is asking such questions. Okay. Pink T-shirt, Prabhuji. What's your name?
आपने बोला दिनेश कि किसी और ने बोला दिनेश? नो नो, आपके आगे वाला पिंक टी शर्ट। यस भाई, आपका नाम? पंकज। आपका उम्र कितना है? 24। तो पंकज इज 24, हैंडसम, बियर्ड भी है, एकदम मर्दाना है। ओके। सो पंकज, किसी टाइम पे आप 2 साल के थे तब दाढ़ी था? ओके। तब हर कोई आपको गोदी में लेके घूमता था, पंकज बाबू, पप्पी वप्पी देते थे, गाल खींचते थे, राइट? या ठीक है। तो मुझे वो 2 साल का पंकज दिखाओ ना, जिसकी दाढ़ी नहीं है, गोगली मोगली है, और हर एक लेडीज उसको उठा के पप्पी देती थी। आपको दे सकते हैं अभी उठा के गोदी में पप्पी? जस्ट जोक, डोंट डोंट फील बैड। आप दिखा सकते हो मुझे 2 साल का पंकज? व्हाई? बिकॉज इट डजंट एग्जिस्ट। व्हेन थिंग्स डजंट एग्जिस्ट मींस इट्स डेथ, इट हैज डाइड। जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती मतलब खत्म हो चुका है। सो पंकज अभी यंग है, दाढ़ी है, 24 है। ओके। सो पंकज, मैं आपको 15 साल बाद भी मिलूंगा फॉर एग्जाम्पल। थोड़े एक तो सफेद बाल आ ही जाएंगे, ओके राइट? थोड़ा सा पेट भी बाहर आ सकता है उम्र के साथ में, कुछ भी, बाल भी थोड़े कम हो सकते हैं। एंड आई आस्क यू एट द एज ऑफ 40, पंकज यार 24 में कितने जवान थे, थोड़ा दिखाओ ना 24 साल का पंकज। कैन यू शो मी? Black beard and smart and strong build. Can you show me? No. Because that 24-year-old at 20, 40 years of age has died. It doesn't exist. And Pankaj, I meet Pankaj after many, many years. Whole white hairs, झुर्रियाँ झुर्रियाँ सब लटक रहा है, कुछ भी ठिकाने पे नहीं है। And is, oh भाई पानी पिला दो। And I ask Pankaj, Pankaj 40 years के एज में तो बहुत ज़्यादा ताकत है भाई। What happened now? Can you show me 40 years of your Pankaj? You can't. It doesn't exist. Then Pankaj will be gone. His photo will be there, and I'll ask Pankaj, show me your old age. He won't be able to show me. So you see, this transformation is happening from 2 years without beards, goggly moggly, then youth, strong build, then adulthood, थोड़े से white hairs and everything, old age. It's transforming. But interestingly, हम सब ने हमारे बचपन भी देखा है. We're seeing our Javani, youth. We'll see our adulthood also. We'll also see our old age also. And we will see death also. So there is one who is not changing. Changes are happening externally in the body. But there is one person who is observing all the changes, which is not changing. And that is what we are. Soul. Which doesn't change. It's always there. And as he said, soul is exhibited by the presence of consciousness, चेतना. इसको मैं मारूंगा, कोई रिप्लाई नहीं आएगा, और प्रभु जी को मैंने सर पे जोर से मारा, कुछ सुंदर सुंदर शब्द निकलेंगे उनके मुंह से, राइट? ऑल ऑफ अ सडन, राइट? बट जब कोई मर जाता है और तब मैं उसको हाथ भी काट दूंगा, वो कुछ नहीं बोलेगा. क्यों? बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ सोल इज नॉट देयर. दैट्स व्हाई चेतना इज नॉट देयर. So this is the exhibition of soul. So who we are? Soul. And soul can make higher inquiry in the body of human species. Not in trees, not in animals, not in any other species except human species. That's why I said, Athato Brahma Jigyasa. Please inquire something higher than eating, sleeping, mating and defending. And this is that inquiry we are talking about. Athato Brahma Jigyasa. Brahman means which is eternal, which is all pervading. The souls are all pervading. Who is that one particular person who is maintaining all the souls? These lights you are seeing, I switch the main turn thing off. This will all be off. There is something main which is supplying all these small stars. So Nityo Nityanam Chetanas Chetananam Eko Bhoyo Vidhati Kaman. There are many eternal souls like us. There is one main soul who is maintaining everyone, and he is called Krishna or God. So Krishna is Allah also. Brahman means all pervading. That's Allah. Jesus is not God because he says himself he is Son of God. So Son of God and God is different thing. That's pretty clear, right? But Muslim religion they say Allah naam hai, har jagah pe hai, and that's Brahman. That's Krishna. All pervading, different form.
For example, there is a company called Mercedes. So you see Mercedes everywhere. Okay, but who is the creator of Mercedes? There is some person. Yes, Mercedes is everywhere, but the creator of Mercedes is sitting in his office in the AC cabin, right? He's in his office sitting every time. So he is there everywhere, but he has his own personality in the office. When you say, oh, Mercedes आ गया, but Mercedes का owner तो अंदर बैठा है. So similarly, Krishna is everywhere, but he's there at one place where he's managing everything, and that place is called Vrindavan or Goloka Vrindavan or the spiritual world. So Krishna, he comes every time. Every time. For whom? पक्का हमारे लिए आ रहे? भगवान को और कुछ काम नहीं है? हम तो मजे मारने में लगे हैं टिकटॉक वीडियो में, फेसबुक में, यूट्यूब में. क्या हमारे लिए कृष्णा आएंगे? वाई विल टेक ऑल द ट्रबल? ऐसे एक बार क्वेश्चन इसको पूछा था, अकबर ने बीरबल को पूछा था, ये क्या है? यदा यदा धर्मस्य, जब भी ग्लानि होती है, आई कम टू एस्टेब्लिश द रिलीजन. भगवान खुद क्यों आते? किसी और को भेज देते? बार बार आके इतना तकलीफ क्यों उठाना पड़ता है? सो बीरबल इज स्मार्ट, ही गिव्स प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन. तो उन्होंने क्या किया, अकबर के एक छोटे पोते का जो बहुत लाडला था अकबर का, उनका एक स्टैचू बना दिया, पुतला बने थे मोम का एग्जैक्ट. और उन्हें पता था कि अकबर एवरी मॉर्निंग बालकनी में टहलता है. तो उसी टाइम पे बीरबल मोम के पुतले को कंधे पे रख के जोरों से भाग रहा है. और अकबर देख रहे, ये कहाँ पे जा रहे हो बीरबल, मेरे बच्चे को लेके, मेरे पोते को लेके, कहाँ पे जा रहे हो, कहाँ पे जा रहे हो? एंड बीरबल सोने को तैयार नहीं, वो जाते जाते और जैसे नदी आती है उसमें फेंक देते हैं और चिल्लाते हा 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 हा. और अकबर का दिमाग खराब, ये वो रोको रोको, बच्चा डूब जाएगा. और सीधा बालकनी से जंप मार देते खुद, और जाते जाते वो पानी में डुबकी मार देते और अपने पोते को बचाने की कोशिश करते हैं. मैंने सीज, ओ ये तो पिघल रहा है, ये कौन है? ये मेरा पोता नहीं है, ये तो मोम है. लाइक दैट. तो बीरबल फिर बोलता है, राजा जी, अकबर जी, आपकी इतनी सेना है, एक कहने पे सब लोग जा सकते हैं लड़ाई करने के लिए, आप खुद क्यों जंप मार के नदी में कूदे अपने पोते को बचाने के लिए? क्यों? क्योंकि आपको लगाव है, वो आपका अपना है. वी आर ऑल्सो कृष्णास, बिलोंग टू हिम, ही इज अवर फादर. अहम बीज प्रदापिता, कृष्णा says in Bhagavad Gita. The father never leaves his son alone. That's why he comes again and again, again and again, again and again for his sons, telling them, भाई कितना करियर बनाओगे, कितनी शादियां करोगे, हर जीवन में शादी की है, क्या क्यों फंसे हुए? चलो चलो वापस, हर बार आ चुका हूं, चलो भक्ति करो, स्पिरिचुअल लाइफ करो, मगर नहीं, सुनने को तैयार नहीं हूं. अभी वापस आया हूं, चलो साधु महात्मा को भेजता हूं, छोड़ दो करियर बनना, चलो भक्ति में टाइम लगाओ. नहीं नहीं नहीं, because we are so adamant not to go. That's why he is also adamant not to leave alone. So he's finding always some ways to take you back, some opportunity he's finding to take you back. And that is what Krishna is, always giving us opportunity. It's us, it's who we are that we are missing the opportunity. Always, every day Krishna is giving an opportunity by giving one more day to live as a human species. He's giving you a chance. Okay, today do something spiritual, go to temple, read something spiritual, chant something spiritual. But we क्या Facebook, और फिर गोरा दिखाने के लिए बार बार फिल्टर 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 फिल्टर, ऐसा फिल्टर डालते जो एग्जिस्ट नहीं करता है, वाइट फिल्टर. राइट, वी वेस्ट सो मच टाइम ऑन दिस थिंग देन टू मेंटेन दिस बॉडी. असाइनमेंट करो, रात भर जग के घस के डिग्री लाओ, और फिर डोर डोर खटखटाओ, भैया नौकरी दे दो, भैया नौकरी दे दो, भैया नौकरी दे दो. बस जितना दोगे दे दो, 30 25 20 बस रख लो अपने पास. देन यू स्ट्रगल, देन योर पेरेंट्स से इतने से कुछ नहीं होगा, लोन लेना पड़ेगा. देन यू स्ट्रगल टू पे द लोन होल योर लाइफ. दिस इज व्हाट मुंबई लाइफ इज, राइट. चादर बोलते ना कि हमारा जो चादर है तो बहुत छोटा है, मगर हम ज्यादा ही लंबा कर देते हैं, और खुद को भी लंबा कर देते हैं उसको भरने के लिए. दैट्स आवर सिचुएशन, just to fulfill something, and we spend our whole life for this, and we forget about Krishna.
That's why Krishna is arranging something. That's why Krishna has made such a beautiful temple in the midst of Maya city, Juhu. Juhu is just like a. You go to the beach, you will see all Maya, nicely Maya, attractive Maya. Right? See in the corner, you see more attractive Maya. Just to bewilder you. Just to bewilder you. Just to make you think you can enjoy. यस यस इंजॉयमेंट मिलता है बाद में वो रात भर जग के बात करना पड़ता है उसका क्या हर फंक्शन पे गिफ्ट देना है उसका क्या उसके बारे में कोई नहीं बोलेगा सजा इट्स ऑल अबाउट एक्सप्लॉइटेशन एक्सप्लॉइटिंग ईच अदर जस्ट टू सेटिस्फाई ग्रेटिफाई द सेंसेस so Maya is also given an opportunity to exploit and Krishna is given an opportunity to get free from this troublesome life but we are always choosing Maya why because we are fool number one animals don't have choice animals they don't have choice we have choice so we have to make the best use of that choice by always choosing Krishna and why you will choose Krishna okay tell me what's the reason that you will choose Krishna instead of Maya is attractive immediate pleasure Krishna says घर आओगे मेरे बाद में अरे अभी क्या मिल रहा है वो तो बताओ अभी क्या मिल रहा है वो तो बताओ वो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है माया तो सीधा ए भाई बस ये ऐप खोल दे सब कुछ मिल जाएगा इधर चले जाए सब कुछ मिल जाएगा इमीडिएट इंजॉयमेंट व्हाट यू आर ऑफरिंग बाल निकालने बोल देते हो जप्पा करने बोलते हो सवेरे 4 बजे उठने बोलते हो टॉर्चर कर रहे हो हमारे ऊपर राइट बट माया से जितना बेटा सोना है सो जो खाना है खा कोई देखने की जरूरत नहीं है ऑनियन गार्लिक है कि नहीं है खा जो मन में आ रहा है नो रेस्ट्रिक्शन and you are putting so many restriction why should I choose Krishna I will choose Maya so I want to ask you why should we choose Krishna instead of Maya tell me not devotees who are chanting Hare Krishna the ones who are still getting inspired more and more I want to ask new people huh you're new yeah but still you are not so new I'll give you a chance don't worry Prabhu I'll give you a chance no worry anyone हम कृष्ण के लिए क्यों चूज करनी चाहिए हमें हम कृष्ण को क्यों चूज करना है माया के बजाय जो कि ज्यादा अट्रैक्टिव है एटर्नल लव तो अभी मिलने को तैयार है नियम कानून तोड़ के अभी लव मिल जाएगा हाँ? उनका लव डिफरेंट है यहाँ पे इमीडिएट लव मिलेगा प्लेजर मिलेगा फ्लर्ट करने मिलेगा और उसमें जो मजा है भाई साहब यू कांट से मजा नहीं है उसमें कृष्णा भगवान है तो चुनना है ठीक है भगवान है मगर कुछ इंस्पायर तो करो मेरे लिए क्या है उसमें मेरे लिए क्या है बस वो भगवान है मुझे क्या है उसमें वो भगवान है तो ठीक है मेरे लिए क्या है उसके अंदर where but I am talking about now what I am getting now forget about what we'll get later I am worried about now yes bro will take us back to God and there is long term happiness but what I am getting now I am worried about now पीस पक्का कृष्ण को चूज करने के बाद पीस मिलता है इच्छा नहीं होती है माया आती है ले बेटा आखिरी मौका yes you tell yours for getting soul purified yeah you can say for purifying ourselves yeah but why to purify when everything is good Maya doesn't ask to get purified Krishna is asking sarva dharma parijya mam ekam sharanam vaja aham tvam sarva papebhyo moksha sannivasucha but Maya no sucha come here yes bro तो दुख नहीं आता जीवन में पांडवों ने इतना भक्ति किया क्या मिला उनको एक तो पूरा राज्य छीन लिया उनसे ठीक है फिर बीवी की बदनामी की गई और जो अच्छा खासा राज मिला तो उसको भगा के फिर जंगल में भेजा गया एक दिन के लिए नहीं भाई साहब सालों के लिए मजाक है क्या आपको बोले घर से बाहर निकलो जाके वो गोरे गांव का जो जंगल उसमें आके बैठो
भाई नहीं कर रहा भक्ति ले लो. So why we should choose Krishna? It's a very important question. Yes, bro. To get rid of material world. To get rid of material world. Yes, but as long as we are here, we'll be in the material world. So how we'll get rid of it after staying in the material world? You're all talking about the end thing. I'm talking about the present thing. What you will get now that will inspire you to choose Krishna every time. Krishna is God. That's good. Yes, He is God. But what will I get to inspire me again and again to choose Him? That's what I'm asking. Yes, bro. Happiness. Maya also gives happiness. I said, there is some happiness, Baba. When you eat some nice ice cream, you get happiness, right? Even though it's not offered to Krishna, it's tasty. So why should I Namo Brahmane Devaya Go Brahmane Hitaya Cha Tulsi Dava? Why should I do all the things? I count happiness. Why should I follow the rituals? I'm getting easily happiness. This question, the mind will raise in your thought process again, and that's why I'm asking you these questions. Why should I choose Krishna instead of Maya, which is easily available? To gain consciousness of what? To gain consciousness that we are suffering like a dog. We are chewing the chewed. चिंगम खाया कभी चिंगम? चिंगम थूकने के बाद वापस खाते हो क्या? But this is what you are doing every life. You did the same thing in your old body. Same bodily pleasure, same career, same thing. You're doing it again. And there is no taste. But still you're trying to चिंगम चाट चाट के भाई कुछ तो निकल जाए उसके अंदर. कुछ निकल नहीं रहा है. कुछ निकल नहीं रहा है. But still you're doing that. So by choosing Krishna, you will be realizing that I am chewing the chewed. I'm unnecessarily trying to get happiness from something which is hollow, where there is no substance. It's attractive. You have seen Pandora box? You have heard of Pandora box? It's attractive. But when you open, all the negative things comes from that. So this is what Maya, she offers you. Loan le lo bhai, loan le lo. और ब्याज 7 से 10. वो नहीं बताएंगे. So it's like that. Your youth now, loan is very heavy thing. You understand that? It's not. और एक लोन होने के लिए फिर एक और लोन लेना पड़ता है. ये लाइफ है. Your whole life is in loan. That's why by choosing Krishna, you will be made aware that yes, you are suffering like anything. एक बार इंद्रदेव को शाप मिला था. इंद्र को. Okay, Indra is like the head of the demigods. अप्सरा अप्सरा सब कुछ है उनके पास. हमें एंजॉयमेंट का कोई कमी नहीं है. हमें एक अप्सरा लाने के लिए जो अप्सरा नहीं रहती है कितना पापड़ बेलना पड़ता है. और वहां पे तो बोलने पे हाजिर. Okay, so that's the position, Indra, enjoyment. He did something wrong, he was cursed to become a hog. Hog means sewer. ठीक है. He got the curse and he was here and मस्त में कि hog मिल गए, बच्चे हो गए, बढ़िया रोज enjoy कर रहे थे. कभी ये हॉग के साथ में, वो हॉग के साथ में, और टाइम बिताते गए. ब्रह्मा जी आगे भाई इंदिरा का पोस्ट खाली है, who will manage? मैनेजमेंट ड्यूटी. He went down. चलो भाई हो गया तुम्हारा श्राप का पीरियड, अब चलो. ना मेरे बीवी मेरे बच्चे, हॉग बीवी हॉग बच्चे, हम हमारा वो ताजा अभी बाथरूम से निकलने वाले वो खाएंगे हम लोग. सो टेस्टी हलवा. तुम मुझे 100 रुपए भेजोगे, घी का खिलाओगे, ये अच्छा इतना मिलेगा इधर से, वो खाऊंगा मैं तो. नो आई एम नॉट कमिंग. इसका तो ये तो पागल हो गया है. Then what he told? Let me cut the arrangement. He killed his wife, hog, and he got angry and came to kill Brahma ji. So Brahma ji was delivering him from the most miserable condition, but for him it was the stupid thing to do. His consciousness was so dull. Was not able to realize that he's suffering by eating stool. That's the consciousness that we have developed. That from choosing Maya, we can be happy. And Krishna makes you aware you can never be happy. Please understand this. Maya has Trishul. She doesn't have flower in her hand. She has Trishul. Thap maregi. So whenever you desire to enjoy Maya, she is ready with her hand raised. झापटिया धरी, थप करके झापट मारती है. She slaps you when you are very elevated. जब सब बढ़िया टॉप में रहते हैं जीवन में,
सब हमारी सब चलता है, तभी मारती है झापट कि जोर से गिरना होता है ना, फिर दर्द भी उतना ही होता है, राइट? दिस इज व्हाट माया डज. तो माया इज नॉट फ्रेंडली, शी इज वेरी वेरी हार्श. You can see in the news, right? What's happening around the world? All people are doing so much nonsense. We are also getting affected by it. That's why we don't have to take birth again to see that. Kali will be more horrible than now. It's already getting horrible. Why should I take birth again? Let me choose Krishna. Janma karma cha me divyam evam yo veti tatvatah tyaktva devam punarjanma naiti mam eti so Arjuna. By knowing Krishna as it is, tatvatah, you will never take birth again after this life. So that's why you have to choose Krishna. Krishna, whatever you say, Krishna, I will try to listen to you. And why will I listen to Krishna? Because I will hear about him. Krishna is merciful. That's why we have whole Bhagavatam about Krishna. When there is trouble, Pandav trouble mein the, Krishna helped. Draupadi was in trouble, right? कौन है द्रौपदी के पति? Tell the names. Arjun. Who is Arjun? The most powerful archer. दूसरा Bhim. Not an ordinary personality. तीसरा Dharmaraj, Yudhishthir Maharaj, Nakul and Sahadev. The most powerful husband she has, and she is being stripped naked. And they can't do anything. They can't do anything. Who's there in the assembly when she was getting such torture? Bhishma Pitama, Dronacharya, all the personalities in the world were there. Helpless. Helpless. There was no point in taking shelter of her own arrangement. And she shouted, "Hey Govinda!" First she was trying to shout like this, "Hey Govinda," and trying to hold on to her sari. And who was taking the sari? Dushasan, who has the strength of thousands of elephants. What she will do? So she said, "अभी कुछ फायदा नहीं है." "Hey Govinda!" Then all the sari came. Total surrender, total dependency, totally choosing only Krishna, not your own efforts. Choosing Krishna, depending on him. That's it. So this action of dependence is the best thing that we can do. What we are doing, we are always choosing to be independent. That's why we are here in this material world. And taking pride in that. Oh, ये मैंने किया है, मैंने करियर बनाया. बुद्धि किसने दिया है? शरीर किसने दिया है? किसने दिया है? आपने चूज किया. हाँ, ये माता पिता ज्यादा अच्छे. हाँ, ये गोरा मिक्सचर मिलेगा, इधर इधर जन्म लूंगा. आपने चूज किया. So what you are saying? I made my thing. You didn't mean it. You are just going through what you are deserving. You are just seeing a movie. Nothing is happening as per your control. You are made to feel that you are controlling. But in the end, the reality comes up. Sarva haras chaham, Krishna says. At the time of death, Krishna takes every damn thing that you think it's yours. And what thing is one thing that we think that it's mine? This body. Krishna takes your body also. You don't want to get old, but you are getting old. Who's controlling that? You're not controlling that. Do you want to get old? No, sir. I want to be smart and handsome. But you are getting old. Do you want to die? Yeah. Right now? But you can't control that. You can die any moment. Still, who is controlling? He is controlling that. But ahankar vimudatma karta hamiti. I think I'm controlling. That's Maya. So let's find the best thing in our life, make best use of this opportunity that we have in human species, and choose Krishna. Listen to Krishna. At least this one lifetime, listen to Krishna. और कुछ ज्यादा नहीं मांग रहे हैं. जितना समय मिले थोड़ा सा हरे कृष्ण जप लो. समय मिले तो मंदिर आके दर्शन कर लो भगवान के. खाते तो रोज हो तो गलत चीज मत खाओ. ऐसी चीज खाओ जो भगवान को अर्पण कर सके. तो उनके थ्रू तो आया है. Who is giving you rain? Modi government? Who is giving you rain? To shift water from one place to another, you need so much large tanks. And Krishna, without any expenditure, is lifting the whole water by evaporation, and is moving the water, gallons of water, from one place to another through clouds.
This is Krishna's arrangement. What is our arrangement? टंकी बड़ा बड़ा, फिर पाइप डालो, फिर पंप करो ऊपर चढ़ाने के लिए. ऊपर चढ़ाने के लिए कितना पंप? 10 HP का पंप लगता है. And without pump, Krishna is lifting that. और जहां पे गिराना है उधर ही गिराएंगे, जहां पे नहीं गिराना वहां पे नहीं गिराते. Everything is being controlled by him. So he is controlling everything. So let's choose him. Don't let you choose anything wrong. Maya is attractive, yes, but it's not essential. You have to understand. Maya is attractive, but she is not essential. Because soul doesn't need Maya. Soul doesn't need this body also. Soul only needs one thing, Krishna. And as long as we connect this soul to Krishna, we will be peaceful because we will be satisfied. That's the only missing thing in our puzzle, which is not there. Krishna. So we have to add that in our life. And the more we add in our life, the more satisfied we will be. The more you are satisfied, the more happy you will be. Automatically. And in that stage, when you are satisfied, loss, profit, galat, sahi, kuch bhi hua, you won't be bothered by it. Not a problem. Not a problem. Fixed. Vyavasatmika buddhi. Ekaha kurunana. I'm fixed on only one thing. Doing something for Krishna. Bad, wrong, profit, loss, it won't bother you. That's why Pandavas, they were never bothered. गलत होने के बाद भी. Kunti Maharani, when Krishna gave the kingdom to Yudhishthira Maharaj, established him as the king of the whole world, Kunti Maharani said, now you are here, now you will be going back, you are relieving us from all the miseries, but I pray that you give us more miseries. भगवान और दुख दो हमारे जीवन में. जब भी हम दुख में रहते हैं हम आपको पुकारते हैं. And then you come yourself to help us. You come yourself to help us. To give us more miseries than leaving us alone. This is what Kunti Maharani is praying. And yes, Krishna comes himself. It's a nice story which I'll try to share with you. Then we'll take question and answer. There was one Acharya, Yamnacharya in the south, who was writing commentary on Bhagavad Gita. Krishna said in Bhagavad Gita ki, I protect what you have, I provide what you lack. He said, Vaha me aham. I personally come and give you that. And yes, Yamnacharya was just starting his commentary on that, but he went for Madhukari. As a Brahman, he didn't work, just went, asked for a few alms, जो मिलता था, उसे वो घर चलाते थे.